अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, अब हमने जो आज पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है फिलिप्स कर्व। अच्छा, अब आप लोग ज़रा याद करो, जब आप लोगों ने किया था मिड टर्म से पहले थ्री लिंक मॉडल्स, ठीक? थ्री लिंक मॉडल्स किए थे ना? उसके एंड में मैंने आपको करवाया था कि जी अनएम्प्लॉयमेंट अगर जो है वो कम करनी है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के फिगर्स आपने बच्चों निकाले थे और कुछ हद तक आपने कुछ बच्चों ने अच्छा भी किया हुआ था। मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी मैंने आपसे कहा था थ्री लिंक मॉडल्स को बताओ, ठीक है? और उसमें आपने जो थे वो रिलेशनशिप निकाली हुई थी बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ज़रा याद तो करो, उस वक़्त हम वी वर वर्किंग विद द फिगर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? और अगर आप दोबारा से जाओ और वही वाली आप अपनी असाइनमेंट चेक करो, थ्री लिंक मॉडल्स वाली, और जो जिसमें आपने जो थे वो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से पाकिस्तान के फिगर्स निकाले थे, ज़रा देखो। उसमें भी आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगी और वो ये कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ भी रही होती है तो कई दफ़ा उसके साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है, ठीक है? तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट साथ-साथ कम हो रही है। यही चीज़ जो है ये ऑब्ज़र्व की थी विलियम फिलिप्स ने, ठीक है? और अब वो आपको यहाँ पे इसकी बात पूरी बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की जो ऑब्ज़र्व की विलियम फिलिप्स ने, इसको उसने नाम दिया फिलिप्स कर्व का। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड वीडियो है, ज़रा इसको सुनो कि फिलिप्स कर्व के पीछे क्या लॉजिक है। In the late 1950s, William Phillips noticed a correlation between unemployment and inflation. And I have a picture of this gentleman right over here, Irving Fisher, because he actually noticed that relationship a few decades before. But the relationship has taken on Phillips's name, really because his publication kind of captured. तो फिलिप्स का नाम इसके साथ आ गया। इससे पहले और काफ़ी सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने रिलेशनशिप सजेस्ट की थी, लेकिन नाम जो है वो फिलिप्स का ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अर्विंग फिशर की हमने एक इक्वेशन की थी, वो वेलोसिटी ऑफ मनी, वो याद? ही इज़ आल्सो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इसने इससे पहले ने इस तरह की चीज़ें सजेस्ट की हैं, लेकिन फिलिप्स के नाम ज़्यादा पॉपुलर हो गया। People's imagination. And the relationship is not that surprising. It seems to fall a little bit out of common sense, but we'll talk about examples that seem to go against this relationship. If I were to plot the unemployment percentage right over here, unemployment percentage on my horizontal axis, and I plot inflation on my vertical axis. So let me put inflation here. Inflation on my vertical axis. Then he noticed, and I'm just going to pick random data points, but in one year where there was high inflation, there was अब ये जो डेटा पॉइंट्स ये बना रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है? यानी उसने इन्फ्लेशन का डेटा लिया और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लिया। अब ये रिलेशनशिप दिखा रही है, जब यहाँ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आपने लिए हुए हैं एक्सिस के ऊपर, तो आप बड़े आसानी से ये कह सकते हो कि फिलिप्स कर्व इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है? उसने एक कोरिलेशन डिस्कवर किया। ये वाला पॉइंट देखोगे अब ये, और ये वाला पॉइंट वो अब इसकी एक्सप्लेनेशंस बता रहे हैं, ज़रा गौर से सुनो। low unemployment, and then in another year where there was high unemployment, there was low inflation, and it's not clear which one is causing which, or maybe they both circle back on each other. And then in other years, maybe where you had medium inflation or relatively low, you had relatively low unemployment. And so he looked at a bunch of years and plotted them on an axis like this. ये ज़ीरो है, ये हाई इन्फ्लेशन है। हाई इन्फ्लेशन, कम अनएम्प्लॉयमेंट। ये ये पॉइंट ज़ीरो अगर ये है, ये कम इन्फ्लेशन और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये रिलेशनशिप देखते जाओ। ये बेस्ड ऑन डेटा था। उसी किस्म का डेटा जैसा पाकिस्तान में आपने निकाला है। फिलिप्स साहब ने वो डेटा ऐसा यूके के लिए निकाला और इस किस्म का एक ग्राफ प्लॉट किया। So let me do them all in the same color. So you take a bunch of years and you plot them here. So now you have higher inflation, slightly higher unemployment than that year over there. And I could just keep plotting
keep plotting some points over here. You could even have deflation. And what he saw is there's a correlation here, that there's an inverse relationship, that if you were to try to fit a curve to these points, and you could have more points here, and I'm just picking them at random, you could fit a curve that looks something like this. You could fit a curve that looks something like this. That's generally saying that when you have high inflation, so that's up here. So when you up here, you have high inflation, low unemployment, high inflation, and low unemployment, unemployment, which is the low unemployment part is a good thing. And out here, you have low inflation, and high unemployment. High. And if this curve goes below the horizontal axis, you could actually have deflation. High unemployment. And it makes, I think, reasonable sense. We've kind of talked about it in common sense terms before, but you could imagine, and once again, it's not clear which one's causing which, but you could imagine in a world. हाँ, ये जो पॉइंट का है ना, which one is causing which, ये बहुत important point है. These two coexist, ठीक है, ये coexist करती हैं. जब ये ज़्यादा है तो ये कम, और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा. अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन ज़्यादा. फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, इन्फ्लेशन कम. ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? अब कौन-सी चीज़ किसको कॉज़ कर रही है, नहीं पता होता. हम जब इसमें से पॉलिसीज़ निकालते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि डेटा तो हमारे पास सिंपली ये शो कर रहा होता है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ठीक है? वो ये नहीं शो कर रहा होता कि कौन-सी चीज़ किसकी वजह बनती है, ठीक है? वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, वो हम खुद उसकी अ, आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं. तो ये आर्ग्यू अब बताएगा आपको कि ये क्यों दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं. व्हिच कॉजेज़ व्हिच, ये नहीं डेटा बताता हमें, वो हम खुद उसके बारे में सोचते हैं. डेटा हमें जो बताता है कि दोनों इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं. Just reasoning through it, that if you have low unemployment, or you could view that as high employment, low unemployment, one way to view low unemployment is that you have high utilization of the labor market. Well, now in this situation, workers have more leverage. Workers have more leverage. And if workers have more leverage, then employers will have to increase wages to attract and retain employers. So they have more leverage and they have more options. There are a lot of people looking to hire them. Employers, so let me think of it from the employers. Employers raise wages to attract and retain employees. Attract and retain employees. But of course, when you increase wages, you are increasing buying power, generally for workers. So this is increasing workers' buying power. Increasing buying power, which would increase their demand. So this is going to increase their demand for goods and services. And if they're increasing the demand for goods and services, it's going to increase the utilization of all of the factors of production, of land, of capital, of entrepreneurship, and of labor. And so that's going to lower unemployment even more. And you can imagine if you already have low unemployment, and this is just one of the factors of production, but if you think about all the factors of production, they're probably all highly utilized. The factories are running at close to full capacity. The labor market is running at full capacity. If you increase buying power and you increase demand in that context, so demand is going up, lower unemployment, capacity utilization, or I guess you say labor utilization, is going down. There's less capacity, more demand. This is going to cause prices to go up. So this is going to cause prices to go up. And then if prices go up, now workers have leverage and options when there's low unemployment, but they also have higher costs. So then we'll also say workers have higher costs. Higher cost of living. And this is a very kind of hand-wavy diagram, but it's just to make you think about the overlying dynamics. And so, अच्छा, अब ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई why is it that जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है
तो इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से बढ़ सकती है। ये उसकी एक आर्गुमेंट प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या कहता है कि बेरोज़गारी कम है, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि लोगों को काम करने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, उनको काम करने के मौके मिल रहे हैं, ठीक हो गया, ये वाली सिचुएशन। काम करने के मौके मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मौके हैं काम करने के और एक तनख्वाह कमाने के, ठीक हो गया। तो वो जो है वो इसको लेके और वो जहाँ एक जगह उसको तनख्वाह में कम मिलती है तो दूसरी जगह जा सकता है क्योंकि काम करने के मौके कम हैं, ठीक है। अच्छा काम करने के मौके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जहाँ मर्ज़ी काम करे, ठीक है? और जब वो ज़्यादा तो इसलिए क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, कि वो अच्छी जो लेबर है, वो उसको अपने पास रिटेन कर सकें, क्योंकि वो उनके पास ऑप्शंस बहुत है ना। तो लेबर के पास बहुत ऑप्शन है, तुम हम अच्छे पैसे नहीं दोगे, हम दूसरी जगह चले जाएँगे। इसलिए उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेज है वो बढ़ेगी, ठीक है? अच्छा जब वेज बढ़ेगी तो जब लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा तो ये तो बाइंग पावर है ना, उससे उनकी डिमांड बढ़ेगी और जब उससे डिमांड बढ़ेगी तो ये तो आपको लॉ ऑफ डिमांड से पता है जब डिमांड बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो एक अपवर्ड प्रेशर होता है ऑन प्राइसेज़, ठीक है? तो अपवर्ड प्रेशर होगा ऑन प्राइसेस जब अपवर्ड प्रेशर होगा ऑन प्राइसेस तो उससे जो है वो उसका मतलब है जिसको कि इन्फ्लेशन भी कहा जा सकता है। तो आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि जी ये कैसे है अनएम्प्लॉयमेंट और और इन्फ्लेशन का आपस में क्या ताल्लुक है? तो ये ताल्लुक जो है ये फिलिप्स ने इसको डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद कि जी ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं, ज़्यादा इन्फ्लेशन और कम अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके पीछे लॉजिक इसने ये दी है, ये वाली सारी लॉजिक दी है कि जी जो है वो अ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे, उनके पास बाइंग पावर ज़्यादा होगी। जब बाइंग पावर ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, उससे प्राइसेज़ ज़्यादा होंगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी। ये इस किस्म की जो इन्फ्लेशन है, ये गुड इन्फ्लेशन है बच्चों। सो ऑल इन्फ्लेशन इज़ नॉट बैड प्रोवाइडेड द इन्फ्लेशन इज़ हैपनिंग बिकॉज़ लोगों को काम करने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छी है। एक एक नेचुरल लेवल ऑफ inflation is sign of a healthy economy. It means productivity is increasing. However, it doesn't always happen like that. यही तो प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम आपको बताता है जहाँ ये सारा का सारा जो लॉजिक है ना जो फिलिप्स ने बिल्ड किया था वो कचरा हो गया। Workers have more options and leverage. They also have a higher cost of living. The whole economy is kind of operating at close to full tilt, and so they're going to demand higher wages even more. And then this thing can keep cycling and keep cycling. Now, this seems a bit common sense, but there are exceptions to these. In the 1970s, the United States experienced stagflation, and that's kind of the worst of both worlds. That's high inflation and high unemployment. So that अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा स्टैगफ्लेशन जो पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है और आप लोग महसूस भी करते हैं कि आपके पास नौकरियाँ हैं नहीं और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? ये होती है स्टैगफ्लेशन, सिर्फ़ पाकिस्तान में ये नहीं फिनोमेना अकर करता, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी एक अमीर और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड आल्सो एक्सपीरियंस द सेम फिनोमेना। सो लेट अस सी इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? that is right over here. And things that could cause it, and in particular what people point to in the 1970s, and it's always important to realize in economics, people don't know for sure what was the exact cause, and there seldom is only one cause. But one of the things that's often pointed to is that you had a supply shock. You had a supply shock. And the supply shock was in oil. It made the cost of producing everything more expensive, and so that just drove the prices up. But it really didn't allow the country as a whole to become more productive. One way to think about it is it drove the prices up here, caused a higher cost of living right over here. But this part of this cycle that we would normally associate with low unemployment and low and high inflation was not occurring. So this part right over here, this part right over here was not occurring. And because those higher prices were essentially going out of the country, you could essentially imagine that they were squeezing out people's ability to pay for other things. So the higher cost of living or the higher prices for oil, you could draw a line from either one, and I know it's getting messy now. You could imagine that it inhibited demand. It inhibited demand
for domestic production. So I'll draw negative feedback right over there. So it squeezed out people's desire to buy things from the US because they had to pay so much for oil. And there's other explanations for it. When people saw the low unemployment, the government wanted to print even more money to fuel things, but it did not get this kind of virtual cycle happening. There are some arguments that there were just structural reasons why the economy couldn't adapt properly so that employees or workers and resources couldn't be allocated efficiently. But the whole point of bringing up the 1970s is to show you that this isn't a law, and it's not clear what's causing what. That there is ठीक हो गया? दिस इज़ नॉट अ लॉ, मैंने पहले भी आपको बताया, ये आपको दोबारा बता रहा है, ठीक है? ये लॉ नहीं है। अच्छा, अब ये वाली जो सिचुएशन है, इसको ज़रा मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, अभी ये तो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, और ये अच्छी वाली इन्फ्लेशन है कि भई लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं, जो है आपकी बेरोज़गारी वो कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वेरी नाइस, उसकी वजह से हल्की-सी इन्फ्लेशन के अंदर भी इंक्रीज़ है, और कुछ हद तक जो है वो आपकी जो अ आपकी जो अ, स्टेट बैंक है वो भी प्रिंट करता है, प्रोवाइडेड प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो उससे कोई इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, उससे इनफैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है। अच्छा, अब हुआ ये 1970s में जो या वहाँ हुआ और पाकिस्तान में और दुनिया भर में, जो कि अब आप देखेंगे वो होगा, मतलब दुनिया डर रही है इससे, कि एक नेगेटिव सप्लाई शॉक आ गया। ठीक है जी, 70s का जो सप्लाई शॉक था, जिसका हमें अच्छी तरह पता है क्योंकि पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, वो था जी क्योंकि उस वक़्त जो यूनाइटेड स्टेट्स था और बाकी सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ थी ना, वो अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, और प्रोडक्टिविटी के लिए दे वर डिपेंडेंट ऑन ऑयल, ठीक है? उनके पास अपना लोकल ऑयल तो इतना था नहीं, तो उनको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ से जो था वो ऑयल इम्पोर्ट करना था। ओपेक, उन सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक एका बना लिया जिसका नाम उन्होंने रखा ओपेक। सो ओपेक ने ये बात सोची, मैंने आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, ओपेक ने ये बात सोची कि अगर हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे तो हमारी तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाएँगी, ठीक है? तो उन्होंने मिल के ये जो सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, जिसमें आपका मिडल ईस्ट भी शामिल था, कुछ आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ शामिल थीं, मेरे ख़्याल में नाइजीरिया वग़ैरह भी शामिल हुआ था इसमें कुछ अरसे के लिए, तो मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ भी शामिल थी। ख़ैर, जितने भी मुल्क शामिल थे, उन्होंने मिल के एका कर लिया, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने मिल के एका कर लिया कि हम तो अपनी सप्लाई क कम कर देंगे, प्राइस उनकी ज़्यादा चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, क्योंकि उनकी इतनी डिपेंडेंसी थी, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी ऑयल के ऊपर, तो ये उनका आ गया एक नेगेटिव सप्लाई शॉक, व्हिच मीन्स कि प्राइसेज़ बढ़ी नॉट बिकॉज़ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्राइसेस बढ़े तो बहुत अच्छा सिचुएशन है, कोई मसला नहीं है इन्फ्लेशन का फिर। लेकिन स्टैगफ्लेशन तब होती है जब के प्राइसेस जो है वो बढ़ रही होती हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी होती, और वो उसका एक वजह, बहुत सारी वजूहात हो सकती है, एक मेजर वजह इस किस्म का एक सप्लाई शॉक हो सकता है, जो 1970s में ओपेक की कंट्रीज की ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करने से जो इंक्रीज हुआ था ऑयल प्राइसेस का, दैट वाज एट दैट टाइम दैट वाज अ नेगेटिव सप्लाई शॉक। उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर इस तरह का एक नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसका आउटकम होता है स्टैगफ्लेशन। अब ये हमने देखना है कि भाई स्टैगफ्लेशन को कैसे अवॉइड किया जाए। समटाइम्स इट कांट बी, लेकिन उसकी और किस्म की आपकी टेक्निक्स होंगी उसको रिड्यूस करने की, लेकिन डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया कि ऐसी सिचुएशन में जब स्टैगफ्लेशन का डर हो, तो अगर आप क्या स्टेट बैंक अपना एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा। ठीक हो गया? ये पूरी लॉजिक उन्होंने बताई, ये ज़्यादा नुकसान करेगा और लोगों के पास जो है वो पैसा ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, और एक्सपेक्टेशंस भी और ज़्यादा नेगेटिव होनी शुरू हो जाएँगी। तो सप्लाई शॉक नेगेटिव तो है ही है, ऊपर से अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो गई, तो और ज़्यादा जो है वो एग्रीगेट डिमांड खराबी मचाएगा, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक हो गया? तो इसलिए स्टैगफ्लेशन के ये रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट करती है, जो कि आपका ये जो ट्रेडिशनल
कर्व है ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अभी इसी कर्व को लेके ऐसी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन किया है द क्लासिकल केस, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो इसका फिलिप्स का ओरिजिनल कर्व है वो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करता। ये होती है नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से मोस्टली, और भी इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस का भी ताल्लुक होता है। There was a situation in the 1970s where you had stagflation. And the opposite of that was what we really saw in the late 90s, where you had relatively low inflation and you had relatively low unemployment. So, this is a very good situation that we had in the late 90s. And the argument that many people make why we were able to do that, why this cycle didn't keep going on and on, why the prices didn't go up, is that you had this other trend of huge technological improvement. You had computers and telecommunications, had this, and the internet went under this in this kind of super. अच्छा, पाकिस्तान में भी ये 1990s के अंदर ये जो एकदम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 1990s के अंदर जो है ये इसका बूम होना शुरू हुआ था, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी वेव थी जो कि आई थी। ह्यूज बिग वेव और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की, जिसको कि अब आप लोग टू टेक इट your generation definitely doesn't know the time before this kind of mobile phones everywhere, लेकिन ये internet and the communication technology, it really transformed the world. तो yes, अमेरिका के अंदर तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ही हुई, सारी दुनिया में हुई, पाकिस्तान में भी हुई। और एक्चुअली पाकिस्तान में हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो अपटेक है वो बहुत अच्छी है, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो 1990s के अंदर बहुत अच्छी अपटेक थी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और उस वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारे दूसरे जो बेतहाशा पॉलिटिकल मसाइल है उनकी वजह से हमने उसको वेस्ट कर दिया उस वेव को, वरना वो वेव आई थी, आई लिव थ्रू इट, इट वाज अ वेरी नाइस टाइम। Productivity curve. So even though you had the cycle, you had an increased buying power, demand was going up, the productivity of the country was increasing so much that it did not lead to inflation. And so that's what threw us there in the late 90s. So in general, it's a neat thing to think about. It's to, at least to some degree, it seems like common sense. But like in all things in economics, it's always a little bit more nuanced and complicated than just some little. तो ये बता रहे हैं कि यानी जो अभी तक सारी लॉजिक आपको बताई इतनी ज़्यादा सिंपल वैसे है नहीं, इसके अंदर और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसको ज़रा हम थोड़ा-सा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा देखने की It's कोशिश about करते हैं। aggregate demand and aggregate supply and the Phillips curve, and we're going to connect these ideas. So, first, the Phillips curve. This is a typical Phillips curve for an economy. High inflation is associated with. गौर से देख लो, फिलिप्स कर्व क्यों कहते हैं? शक्लों से ना याद किया करो प्लीज़। ये जो शक्लें हैं ना, इनसे मत याद किया करो। कभी किसी रिलेशनशिप को शेप ऑफ द कर्व से प्लीज़ मत याद किया करें कि ये तो एक ही होगी। नो, ये चीज़ जो होती है ना, आप इससे याद करते हैं कि ये क्या कर्व है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि ये कौन-सा कर्व है। कर्व की शक्ल से वो चीज़ याद नहीं होती, और बच्चे जब ये लिखते ही नहीं है कि इसके ऊपर क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, तो वो सेंसलेस सी चीज़ बन जाती है, ठीक है? सो फिलिप्स कर्व बनाना है, तो आप जब इन्फ्लेशन एक्सिस पे और अनएम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे लिखोगे और एक कर्व बनाओगे व्हिच इज़ गोइंग टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग और वर्टिकल, इन दोनों में से एक ही हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग से वर्टिकल हो सकता है, तो पता चल जाएगा हाँ, ये फिलिप्स कर्व बनाया बच्चे ने, ठीक है? और इसी तरह एग्रीगेट डिमांड सप्लाई जब बनाओगे, एग्रीगेट डिमांड तो हमेशा रियल जीडीपी यहाँ पे होगा, इनकम भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, वाई भी लिख सकते हो, दैट्स ओके फाइन टू, बट मीन्स द सेम थिंग, रियल जीडीपी यहाँ पे होगा और आपका प्राइस लेवल यहाँ पे होगा, ठीक है? जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे होगा, तो बीच में जो भी चीज़ बनाओगे वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगी। फिर उसका जब डाउनवर्ड कर्व होगा तो पता चल जाएगा, हाँ यार, ये एग्रीगेट डिमांड है, फिर एडी नहीं भी लिखोगे और यहाँ पे प्राइस लेवल और यहाँ पे रियल जीडीपी लिखा होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तो इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स एग्रीगेट डिमांड। समझ आ रही है? हुँ। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैपिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। Low unemployment. High unemployment is associated with low inflation. But we can really view this curve as the short run Phillips curve. Short run
Phillips curve. We might sit at different points on this curve at different points in an economic cycle, but we can also introduce an idea known as a long-run Phillips curve, which is just based on the natural rate of unemployment for this economy. So let's say the natural rate of unemployment for this economy is 6%. So then our long-run Phillips curve would just be a vertical line right over there. Long-run Phillips curve. Now, why is it a vertical line? Well, it says in the long run, our natural rate of unemployment is 6% regardless of what the inflation rate might be. And so if we are sitting at the intersection of these two curves, that means that our economy right in this moment in time is operating at full employment. If unemployment was lower than that, it would be overheating to some degree. And if unemployment were higher than that, then we would have a negative output gap. But how do we tie these ideas to aggregate demand and aggregate supply? Well, let's draw our long-run aggregate supply curve. And I'm going to do it right at the intersection of our aggregate demand. थोड़ा सा याद करो, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनाया हुआ है, ठीक है? ये जो चीज़ है ना, ये कीन्सियंस का सजेशन थी और इसके पीछे मैंने पूरी आपको थ्योरी बताई थी, वो याद कर लो। वैसे वो मिड टर्म से पहले की थी और मैंने कहा मैं मिड टर्म से पहले का कोर्स फाइनल में तो एग्री नहीं करूँगी, लेकिन उसका ये मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स में मैं नहीं पूछूँगी, इसका मतलब ये नहीं है भूल जाओ। क्यों शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा होता है, याद कर लो, 3 थियरीज़ कराई थी। प्लीज़ गो बैक, लुक एट इट, व्हाई इज़ इट अपवर्ड लाइक दिस? व्हाई इज़ इट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस? ये सब मैंने आपको इससे पहले मिड टर्म से पहले का लॉजिक आपको बताई हुई है, ठीक है? And short run aggregate supply curve for now, because I want to show an economy that's operating at its full potential. So here, this is our long run aggregate supply. And once again, it's a vertical line because in the long run, regardless of the price level, we have a certain output for this economy that is sustainable. So that is our full employment. I'll do F period, E period. That's our full employment output. Anything more than that, it's unsustainable based on where the economy is structurally right now. And anything less than that is you have a negative output gap. But now let's think about what would happen if we start shifting curves around. What if we were to have a negative demand shock? So our aggregate demand curve shifts to the left. Well, in that world, and this is all a review, you can see that your equilibrium price, so let me call this aggregate demand sub 2, our price level 2, and our new equilibrium output for our economy, sub 2, you can see that both are lower. We now have a negative output gap. But what would that correspond to here on our Phillips curves? Well, when you have a negative output gap, you're likely to have higher unemployment. And shifts in the aggregate demand curve would be movements along the short run Phillips curve. So we're going to move along the short run Phillips curve and we're going to have higher unemployment because we have a negative output gap. So we might get to that point right over there. So I'll just call that point sub 2. So we went from a situation where before we had 6% unemployment and let's say we had 3% inflation to a world where maybe now we have, I don't know, let's call it 9% unemployment. And now we have 2% inflation. And it could go the other way around. Let's say we were starting from our original aggregate demand curve and you have a positive demand shock. And so now we could get to this curve, aggregate demand 3. And so here our equilibrium price level is higher. Let's call it P sub 3. And our equilibrium output, we have a positive output gap. So Y sub 3. बच्चों, ये ऊपर कैसे जा सकता है? पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड याद रखो, ऊपर कैसे जा सकती है? ये 100 दफ़ा बता चुकी हूँ, वैसे फिर बता देती हूँ। इट कुड बी एक्सपेंशनरी पॉलिसी ना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और बोथ एक्सपेंशनरी, ये कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से ये हो सकता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की वजह से ये हो सकता है। And that would correspond to, if we have a positive output gap, that means we have very low unemployment, maybe unsustainably low unemployment. So we might be right over here. So this might be a situation where our unemployment rate, let's say that's about, I don't know, 4%. And now our inflation, this might be, let's call that 4% as well.
And something interesting happens as you start to have higher and higher inflation. That can lead to people just having higher expectations for price and higher expectations for inflation itself. And if folks have higher expectations for inflation, well, then they might want to charge more for a certain level of output. So let's say at this level of output, people might want to have a higher price level. At this level of output, people might want to have a higher price level. And so it could actually shift our short run aggregate supply up, or you could say to the left. So short run aggregate supply, I'll call that sub 3. Now, when the short run aggregate supply gets shifted to the left in this situation, notice we are back to our full employment output, but our price level is now much higher. Now, what would that correspond to over here? Well, when you have a shift in short-run aggregate supply curves, that would actually lead to a shift in your short-run Phillips curve. But which way would it shift? Well, another way to think about it is, just as at a given level of output, you would have expected higher price because of this increased inflation expectations. So here, at a given level of unemployment, you would expect a higher level of inflation. So our curve, you could say, shifts up or to the right. So we would then have a short-run Phillips curve that looks like this. I'll call that sub 3. And we might get back to this point. Well, for sure, if we are at this full employment output, then we are operating at our natural rate of unemployment again. But notice, now our inflation has crept even higher. This might be 5% inflation. Now, the last thing you might be wondering about is, when do these long-run curves ever shift? Well, we've talked about it before when we talk about long-run aggregate supply, and that shifts if the economy structurally changes somehow. Let's say our factories get bombed out in a war or something, then this should shift to the left. And if we got better technology or better ways of organizing ourselves or more resources, this might shift to the right. Similarly, if there's a massive shift in global trade and maybe our worker skills aren't as valuable anymore in the global economy, this long-run Phillips curve might shift to the right. If all of a sudden we are able to, or over time, we're able to get people more skilled, maybe we get frictional unemployment down because we have better technology to place people, well, that might shift this to the left. अच्छा जी, ठीक है। अब एक फाइनल इसकी वीडियो देखते हैं जो कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन आपको दोबारा से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेगी। ये तीनों वीडियोस जो हैं बैकग्राउंड वीडियोस, इनकी मैं आपको दूंगी। आई विल गिव यू दी इसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक हो गया? तो देयर इज वन मोर वीडियो व्हिच आई वुड लाइक कि आप लोग देखें, और वो ये है। इसके तीनों के लिंक्स मैं आपको दूंगी। And long-run Phillips curve. Now, they're named after the economist Bill Phillips, the existence of a curve that could describe ये पहली वाली सारी and high inflation. So यहाँ पे ना ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, ये वही पहला वाली जो मैंने आपको बैकग्राउंड वीडियो दिखाई थी, उसको दोबारा से री एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है? लिंक मैं आपको इसका प्रोवाइड करूंगी। बट राइट नाउ व्हाट वी वुड लाइक टू सी इज कि ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन किया जाए। economy, our natural rate of unemployment is 4%, and we see that it is associated with 1% inflation. And so you could imagine if there's some perturbations to the economy, maybe the economy gets a little bit overheated, well, then you could get a little bit higher inflation and lower unemployment. Or if the economy slows down a little bit, you could have higher unemployment and lower inflation, but it should gravitate back to the long-run Phillips curve. But now let's think about this in context of our aggregate demand, aggregate supply model, and think about a scenario where our short-run Phillips curve could actually shift. So here we have our typical axes when we're thinking about aggregate demand and aggregate supply. We have real GDP on our horizontal axis, the price level on our vertical axis. And so our aggregate demand curve might look something like this. It is downward sloping. So let's call that our aggregate demand curve. And then our
short-run aggregate supply curve might look something like this. So as price levels go up in the short run, people are willing to produce more. So this is our short-run aggregate supply. And remember, when we talked about aggregate demand and aggregate supply, we talked about a notion of our full employment output, which is you could view as the sustainable rate of output for an economy. And we can draw that as a vertical line. So this right over here would be our long-run aggregate supply. And where it intersects our real GDP axis, this is our full employment output. If you want to put some numbers on it, maybe this is equal to, for a small economy, maybe this is equal to $50 billion. So the way we've just described this, we are at equilibrium right now. We're at full employment output. Our economy is producing $50 billion per year. And our full employment output implies an unemployment rate of 4%, where we have 1% inflation. Now let's say that there's some type of a demand shock. Let's say all of a sudden the government wants to stimulate the economy even beyond where it is here. And so they start spending all of this money. And so you have a shift in the aggregate demand curve. So it would shift to the right. So the aggregate demand curve would now look something like this. Let's call that aggregate demand 2. Well, what happens now? And we've seen this in previous videos. Now we go from this equilibrium point, which was at this full employment output and at this price level. Let's call that price level 1. And now we are at this equilibrium point. People are demanding more, so suppliers say, hey, if you want me to produce more, I'm going to charge you some more for it too. So our price level has gone up. We are at price level 2, and we are producing above full employment output. Maybe this level right here is 60 billion. Well, how would that be reflected on our Phillips curves? Well, in the short run, our economy has gotten a little bit above potential. So in the short run, we would sit on the short run Phillips curve, and our unemployment rate would go down. But if we assume the Phillips curve, the short run Phillips curve model, that means our inflation would go up. So this point right over here might correspond maybe to this point right over there, where when we get to that beyond full employment output, let's say that this is 60 billion right over here. Well, maybe our unemployment rate is 2% and our inflation rate here is 3%. And so if this shifts to the left, eventually the equilibrium point will go back to where everything intersects with the long run aggregate supply curve. So the short run aggregate supply curve shifts over there, and then we would be back to our full employment output, although our price level would have gone even higher, price level 3. Now, many economists would argue that when you have a shift in the short run aggregate supply, so this would be short run aggregate supply 2, that also is associated with a shift in our short run Phillips curve. Because of these price increases and because workers are trying to renegotiate their salaries upwards, and labor is the biggest factor in price levels, you might have increased inflation expectations. So at a given rate of inflation, you might start having a higher unemployment. And so this short run Phillips curve could shift to the right. So instead of this just gravitating back to where it was before, the whole curve could shift to the right. And समझ आई? यानी जब एग्रीगेट डिमांड के जो चेंजेस हैं वो दे आर शोन एज मूवमेंट्स अलोंग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके अंदर अगर चेंज आए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में भी चेंज आए, जो शॉक की वजह से भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हो सकता है, तो फिर आपको शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है उसकी शिफ्ट नजर आएगी. we get to a situation that looks like this.